Good evening to everyone. Welcome back to our GAUSSIAN tutorial. So आज हम rotation of rigid body देखिबा. Okay, so rotation हमें कौन कौन यूज करछंती moment of inertia केमती कैलकुलेशन करछंती different object रा parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Okay, so देखो. So write down rotation of rigid body. Rotation of rigid body. Okay, so देखो. Actually basically आम जो देखा बेसिकली आमर रोटेशन रिजिड बॉडी रोटेशन जिनस को रोटेशनल काइनेमेटिक्स को कौन बुझापी आम ओनली कौन तीन टा क्वांटिटी आमको दरकार. ओके, तो गोटे है कौन एंगुलर वेलोसिटी. ओके, आउ है एंगुलर एक्सेलरेशन और है टॉर्क. ओके, सो ये तीन टा जिनस देले आम ता विषय स्टडी कर परिबा कि टी टाइम पर आर वेलोसिटी केते फाइनल वेलोसिटी केते. ओके, टी टाइम पर कोडी डिस्प्लेसमेंट अछि हम सब कुछ जान परिबा. ओके, so write down the kinematics of rotation of a rigid body about a fixed axis can be described in terms of angular displacement. d theta बोली कहउछंती. ओके, angular velocity omega and angular acceleration. जोटा हमें अल्फा बोली कहउछ. अंक भीतर रिलेशन कौन ना ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt and alpha is equal to alpha angular acceleration is equal to d angular velocity by rate of change of angular velocity. Okay, तो एबे हमें देखिबा कि angular velocity angular momentum आउ torque भीतर रिलेशन कौन. ओके, तो रिलेशन between torque and angular momentum. A relation between torque and angular acceleration. Okay, देखो. So let's suppose गोटे हमें सर्कुलर मोशन देखिबा हमें. Let's suppose गोटे लाइट रॉड तार एंड रे गोटे मास पॉइंट मास जोटार मास m कनेक्टेड हिची. ओके, तो एटा हला origin O, एटा हला z axis. ओके, तो लेट्स सपोज ए पॉइंट को o रु डिस्टेंस हला r वेक्टर. ओके, देन आ ऊपर f रैंडम डायरेक्शन ले फोर्स पडुची f ताको हमें दुईटा कंपोनेंट रे भांगिबा. गोटे हला टेंजेंशियल ft आ गोटे हला रेडियल fr. ओके, fr गोटे हला ft. ओके, ऑब्जेक्ट रो मास हला m. ओके, मास हला m. तो देन हमें देखिबा कि आ ऊपर केते टॉर्क अप्लाई होची. तो द torque of the force about o टॉर्क सब बोले गोटे about axis कैलकुलेशन करा जाए. about o means ए z axis about रे हमें कैलकुलेशन करबा about o. ओके, इज केते हबो ना हम जानछथि tau is equal to r cross f. ओके, तो f को हमें दुईटा कंपोनेंट रे भांगी छथि. ओके, f को हम भांगी छथि ft f रेडियल कंपोनेंट प्लस f
tangential component. Okay, so is equal to r cross fr plus r cross ft. Okay, okay, तो देखो टेंजेंशियल आउ आर वेक्टर दिटांक सेम डायरेक्शन ले, सो सॉरी रेडियल आउ एफ आउ आर वेक्टर दिटांक सेम डायरेक्शन ले, तांका भीतर एंगल हैला 0, सो आर क्रॉस एफ आर ये टर्मटा कोन हेगला 0 हेगला, तो टाउ बेसिकली रहिला आर वेक्टर क्रॉस एफ आउ टी एफ टी. ओके, सो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ टी. ओके, तो एबे देखिबा हमें टेंजेंशियल फोर्स. ओके, सो टेंजेंशियल फोर्स कोन ना हम डायरेक्ट लिख परिबा r क्रॉस ft, फोर्स जगह में लिख परिबा मास इनटू एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, ओके, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू बा टॉर्क इज इक्वल टू, अच्छा हम एमते लिख परिबा कांस्टेंट m बाहर को आस परिबा m m r क्रॉस at, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन along टेंजेंशियल डायरेक्शन. ओके, ओके, तो देखो ए आउ एटी एक्सेलरेशन आउ आर भितर एंगल केते 90 डिग्री, एटी भितर लिख परिबो आर आउ आ भितर एंगल 90 डिग्री. सो हम लिख परिबा देखो आर आउ ए को क्रॉस कले हम पाइबा जेड कैप. ओके, बा के कैप हम पाइबा. देखो आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ को जदि हमें देखो आर वेक्टर माने ए डायरेक्शन ले. ओके, ए डायरेक्शन ले आर वेक्टर, ए डायरेक्शन ले भीतर, तो एपटू कॉल करले हम कोन कहबा राइट हैंड थंब अनुसार हमें ऊपर वेक्टरटा पाइबा, माने जेड डायरेक्शन ले जो वेक्टरटा ताको हम कोन कहबा के कैप. तो के कैप टॉर्क एक्चुअली बेसिकली के कैप डायरेक्शन ले. ओके, तो एम आर ए टी इक्वेशन 1. ओके, सो टॉर्क हमें पाई गले के कैप डायरेक्शन ले, और मैग्नीट्यूड हला एम आर ए टी. ओके, तो हम लिख परिबा द tangential acceleration at is related to the angular acceleration alpha of the particle about O by. ओके, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लिख परिबा at is equal to r into alpha. ओके, एटा होची एंगुलर एक्सेलरेशन आउ लीनियर एक्सेलरेशन भितरे कोन रिलेशन. तो at को हम लिख परिबा r into alpha, सो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू k कैप m r, at जगह हम कोन पुट करबा ना r into alpha, तो हम लिख परिबा k कैप m r square alpha. ओके, so here I is equal to the moment of inertia m r square, because r perpendicular square, it is discrete mass अच्छी m गोटे mass अच्छी, तो हम लिख परिबा tau is equal to k cap I alpha बा I alpha रा वेक्टर. ओके, सो एंगुलर एक्सेलरेशन टा को डायरेक्शन ले ना k cap डायरेक्शन ले. ओके, सो tau is equal to I alpha is the important relation, आपको जस्ट मन रखिबा. ओके, तो ये गोटे नुआ जिनस हमें पाइले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन. ओके, तो हमें देखिबा एठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो राइट डाउन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी. ओके, ओके, तो फास्ट हमें लिखिबा डिस्क्रीट सिस्टम पाई, देन हमें लिखिबा कंटीन्यूअस सिस्टम. ओके, तो फास्ट लेट्स सपोज हम पाखरे गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम अछि. ओके, लेट्स सपोज तार ओरिजिन हला ओ एक्स वाई एंड जेड. ओके, जेड गोटे कोऑर्डिनेट सिस्टम अछि. लेट्स सपोज एटा गोटे सिस्टम, ता भितर बहुत सारा पार्टिकल अछंती. लेट्स सपोज mj गोटे पार्टिकल, तार सेंटर रु डिस्टेंस लगे थे आर जे. ओके, रेडियल डायरेक्शन ले डिस्टेंस ला आर जे वेक्टर हम ताको डिनोट करले. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी having discrete distribution of mass, discrete distribution of mass
of mass I is equal to summation j. Okay, so m j r j ର square. ସେଠି ଗୋଟେ particle ଥିଲା ବୋଲି m r square होतला. ଏଠି ସେମିତି j ଟା particle ଅଛି ବା n ଟା particle ଅଛି. So j is equal to summation 1 to n. Okay, तो हम लिख परिबा m1 r1 square. देखो ये r distance टा perpendicular distance. Okay, so m2 r2 ର square plus m3 r3 ର square so on up to mn rn ର square. Okay, so basically I is equal to I1 plus I2 up to In. Okay, so I am like pariba the moment of inertia of a rigid body does not depend only on its mass. Mass over depend करनी, rather it depends most important on its distribution. Okay, mass distribution. Mass actually co type ro body रे distribute distribution. Okay, तो से mass ऊपर डिपेंड तो करे ता सहित केमिति mass टा distribution हिची ता ऊपर भी डिपेंड करे. Okay, okay, तो सेकंड पॉइंट हम लिख परिबा moment of inertia of a rigid body has no unique value. Okay, so basically it depends on the axis of rotation. वो axis about आम चाहूँ बॉडी को रोटेट करिया. ओके, सो बेसिकली आम ये कौन जानिबा कि जदि हमको पचारिबो लेट सपोज ये गोटे ऑब्जेक्ट अछि. ओके, तो आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते. ओके, सो बेसिकली हमको एक्सिस जानिया दरकार को एक्सिस रो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करूछन. ओके, तो जदि एक्सिस जाना पड़ला ताहले जाय कि हमें कहि परिबा कि अबाउट दिस दैट एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट मच. ओके, तो सेकंड पॉइंट हला. ओके, सेकंड हला बी पॉइंट हम देखिबा. ओके, ए दुटा पॉइंट इंपोर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऊपर डिपेंड करिवो आ हला एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर. एबे देखिबा डिस्क्रीट रो हम जिबा कंटीन्यूअस सिस्टम. ओके, so let's suppose moment of inertia of rigid body having continuous mass distribution. Continuous mass distribution. Okay, continuous mass distribution. Okay, so let's suppose it would a system x and y coordinate system la x y z o. Okay, so it would a system. Let's suppose ये गोटे continuous system माने mass टा continuously distribute होइछि. So गोटे छोटो एलिमेंट नबा जोतरे कि mass केते अछि dm अछि. ओके, तो से ओरिजिन लु डिस्टेंस लागते लेट्स सपोज r. ओके, ओरिजिन लु डिस्टेंस ला r ताले हमें से छोटो dm पाई. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जदी अबाउट o पॉइंट रे जदी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेशन करबा ताहाले di is equal to कौन हबो ना dm r square. ओके, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करिया पे हमको dm से मास रो डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर हम कोन करिया पड़िबो इंटीग्रेशन करिया पे पड़ो. लेट्स सपोज एटा गोटे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. तो हम लिख परिबा dm is equal to rho into dv. रो हैला मास डेंसिटी बट डेंसिटी हम खाली कोंदी. तो I is equal to dm जगह रे पुट कर दबा rho dv into r square. ओके, तो आम लिख परिबा को r स्क्वायर रो dv. ओके, सो ऐसे वॉल्यूम रे हमें इंटीग्रेशन कर. तो ए टाइप रो हमें कंटीन्यूअस रो ऑब्जेक्ट रो हमें बाहर करबा. ओके, एग्जांपल हमें करबा एबे रिसेंट. ओके, केमति हमें कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करछते डिफरेंट एक्सिस. ओके, तो देन रेडियस ऑफ गायरेशन.
रेडियस ऑफ गायरेशन ओके जोटा हम के बोली नोट कर ओके तो रेडियस ऑफ गायरेशन कौन तो राइट डाउन the moment of inertia of an object about an axis of rotation about an axis of rotation can be expressed as जदि आमे जहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमरा आसिला गोटे सर्टेन कोन एक्सिस ऑफ रोटेशन रु देन आमे ताको डिफाइन करि परिबा एक्सप्रेस करि परिबा टोटल मास आउ k स्क्वायर ओके डिस्टेंस रो स्क्वायर गोटे डिस्टेंस तार स्क्वायर देन k टाको आमे कहबा where m is the total mass and a is the radius of gyration ओके तो रेडियस ऑफ गायरेशन में या बुझी परिबा कि एटा लेट सपोज एटा हला तार एक्सिस जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अछि ओके जहां भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अछि ओके ताको हम गोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट भला ट्रीट करबा ओके तो आरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ई सॉलिड बा ए कंटीन्यूअस सिस्टम रो जहां भी बाहरिबो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू mk स्क्वायर मींस k is the perpendicular distance तामने भाबिया गोटे पॉइंट मास जहार की टोटल मास हला कैपिटल m ओके हाउस एक्सिस रु तार डिस्टेंस हला k तो ई पॉइंट ऑब्जेक्ट रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते आसीबो mk स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द होल रिजिड बॉडी रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस ओके सो इट एक्चुअली बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन ओके तो रेडियस ऑफ गायरेशन ओके तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम जानले एबे देखिबा दीटा इंपोर्टेंट थ्योरम जोटा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम जहार कि प्रूफ एग्जाम रे तमरा आसे सो माइंड करिवाडा क्वेश्चन को ओके so write down the parallel axis theorem okay parallel axis theorem आगे कौन कोची स्टेटमेंट ता लिख दबा ओके the moment of inertia I dash of a rigid body about any axis is equal to sum of its moment of inertia I about center of mass about axis okay about axis parallel to the given axis and passing through the center of mass and kahar summation moment of inertia about a axis parallel to the given axis and passing through the center of mass plus product of mass that is capital M of the body and the square of the perpendicular distance are okay, between the two axes. Okay. So देखिबा डायग्राम अनुसार so I dash is equal to I plus m r square. Okay. So that is the parallel axis theorem. Okay.
So let's suppose ओके एटा हला हमरा गोटे रिजिड बॉडी ओके सो हमको गोटे गिवन देछि ओ डैश और एक्सिस देछि a dash आउ b dash along that axis unit cap हला n cap गोटे से डायरेक्शन ले यूनिट वेक्टर ओके so let's suppose center of mass हला एटा हला सेंटर ऑफ मास cm ओके ये पास करूची आ गोटे एक्सिस सेंटर ऑफ मास देकी व्हिच इज पैरेलल टू a dash and b dash ओके a dash b dash को पैरेलल लिखा अछि which is a b also दिटा को पैरेलल माने तार डायरेक्शन सेम हबो n cap आर सेंटर हला o ओके देन o रु o डैश रु o को हम गोटे लाइन ड्रा कले ओके ड्रा केला r वेक्टर और o डैश हला r वेक्टर ओके लेट्स सपोज हम गोटे इट लिखिबा r वेक्टर लेट्स सपोज हम गोटे p पॉइंट नेले ओके लेट्स सपोज हम गोटे p पॉइंट नेले डाला p पॉइंट एनी पॉइंट तो तार डिस्टेंस फ्रॉम o डैश हला r j डैश ए जो p पॉइंट रे गोटे मास अछि सेटा होची mj लेट्स सपोज mj ओके एंड o एक्सिस रु तार डिस्टेंस हला rj वेक्टर ओके ओके तो जहाँ भी हमें डायग्राम कले ताको जदि चाहिबो तमे वर्डिंग रे लिख परिबो बिकॉज़ प्रूफ 3 मार्क रे आसे कि 2 मार्क रे आस परिबो क्वेश्चन प्रूफ तो प्रूफ करिया पई तुमको प्रॉपर डेरिवेशन करिया पई पड़िबो ओके तो प्रॉपर डेरिवेशन पई हमें जस्ट लिखिबा ओके so a rigid body whose center of mass is at o रे हमें चीज इन center of mass okay the body can rotate about an axis AB which passes through O. Okay, the body can rotate about an axis AB which passes through O means center of mass देखिए AB pass करूची. Okay, let A dash B dash be another axis parallel to AB and passing through O dash. Okay, okay. तो बेसिकली हमको कैलकुलेशन करया पे पड़िबो अबाउट a dash और b dash रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ a b रे ओके तो हमें डिफाइन कर दबा rj वेक्टर हमें काहा नेले rj इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर of the point P relative to O. Similarly, Rj dash position vector of point P relative to O dash. Okay. Then n cap is the unit vector along AB and A dash B dash. जेहेतु दिटांको पैरेलल तो दिटांको सेम यूनिट. Okay. So एबे हम कैलकुलेशन करिबा the moment of inertia of the body about axis A dash B dash okay each केते हबो so I dash is equal to summation over j mj mass into perpendicular distance okay perpendicular distance में हम कौन लिखिबा ना rj cap rj dash cross n cap रो स्क्वायर तो एटा हमें कोठो आनिले ओके समस्त माइंड रे क्वेश्चन आस्थिबो कि एक्सप्रेशन हमें कोठो आनिले तो देखो लेट्स सपोज एटा गोटे एक्सिस अछि
ओके तो এই axis रे हमें कौन कैलकुलेशन करिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके लेट्स सपोज एटा हला ओरिजिन ओ ओके तो एटी अछि मोर ओटे कोन एटा हला n कैप रे डायरेक्शन ओके एक्सिस रे डायरेक्शन तो एटी ओटे पॉइंट p अछि जार मास हला m ओके आर डिस्टेंस हला r so that is not perpendicular distance आंक भीतर एंगल केते लेट्स सपोज आंक भीतर एंगल हला थीटा r और n कैप भीतर एंगल हला केते लेट्स सपोज थीटा so that is our perpendicular distance that is our perpendicular distance okay r perpendicular तो जदि एटा r हला ताले एटा कोन हबो r sin थीटा r perpendicular is equal to देखो ना सो एटा हे जिवो r cos थीटा कंपोनेंट रे भांगिले एटा हे जिवो r sin थीटा तो बेसिकली हम एठी लिख परिबा कि I is equal to कोन m r perpendicular distance के r sin थीटा रो स्क्वायर ओके तो r sin थीटा रो स्क्वायर हला ओके हम आको एमति लिख परिबा देखो स्क्वायर माने डॉट आउट डॉट एटा गोटे वेक्टर तारो स्क्वायर कर दवा माने डॉट आउट डॉट गोटे स्केलर हे जिवो ओके तो m sin थीटा m r sin थीटा r बदले हम कोन लिखिबी ना r sin थीटा केतला आसे क्रॉस प्रोडक्ट रो सो इतमे r क्रॉस n कैप ओके लिखि कि तारो स्क्वायर कर देली बिकॉज़ n हला यूनिट वेक्टर तार मैग्नीट्यूड 1 ओके सेति पई एक्सप्रेशन हम लिखले rj डैश डैश काहे कि लिखले ना कोन पई ना हमें i डैश बाहर करचंदी अबाउट o डैश रे बाहर करचंदी सो एटा दरकार तो एट जदि गोटे परपेंडिकुलर ड्रा करबा हमें हला एट जदि परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस टा केते हबो ना n एटा जदि थीटा हुए ताले कोन हबो rj डैश क्रॉस n n कैप ओके तो सिंपल जिंस जस्ट sin थीटा आछी क्रॉस प्रोडक्ट पई जोटा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओके तो फ्रॉम ट्रायंगल o डैश p ए ट्रायंगल ले देखो ए ट्रायंगल ले जदि हमें वेक्टर एडिशन लिखिबा ए ट्रायंगल ले जदि हमें वेक्टर एडिशन लिखिबा तो हमें ड्रा करथिबो देखो ओके तो कोन लिखिबा ना एटा r प्लस rj इज इक्वल टू rj डैश ओके तो rj डैश को हम लिख परिबा rj डैश इज इक्वल टू r वेक्टर प्लस rj ओके then I dash is equal to summation over j m of j by mj okay, r dash जगह रे पुट कर दबा वैल्यू r वेक्टर प्लस rj वेक्टर ओके क्रॉस n वेक्टर स्क्वायर ओके तो ब्रैकेट ओपन कर दबा समेशन ओवर j mj ओके तो r क्रॉस n कैप ओके प्लस rj क्रॉस n कैप ओके रो होल स्क्वायर तो a प्लस b रो होल स्क्वायर दिटा गोटे वेक्टर वेक्टर तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर होल स्क्वायर तुम ऑलरेडी जानिछ फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b ओके डॉट a डॉट तो समेशन ओवर j mj r वेक्टर क्रॉस n वेक्टर रो स्क्वायर प्लस rj वेक्टर क्रॉस n कैप रो स्क्वायर प्लस 2 r vector cross n cap okay dot rj vector cross n cap okay तो I dash is equal to देखो ब्रैकेट ओपन कर दबा इंडिविजुअल पार्ट नहीं जिबा mj mj r vector cross n cap रो स्क्वायर प्लस समेशन ओवर j mj r vector cross n cap रो स्क्वायर प्लस 2 summation over j mj r vector cross n cap dot rj vector cross n cap ओके तो इंडिविजुअल पार्ट हम लिख दिले तीन टांग तो एबे देखो देखो एठी j डिपेंड नाही ओके तो ये बाहर पळे आसिला तो mj समेशन j मींस टोटल मास हम लिख परिबा m r vector cross n cap रो स्क्वायर ओके प्लस अच्छा एठी देखो अछि rj सॉरी एटा ला rj ओके तो एठी देखो अछि mj समेशन ओवर j mj rj क्रॉस n कैप रो स्क्वायर ताको हम रखिबा आको हम लिखिबा देखो एठी लिखिबा माइनस को उठाले हम कहबी -2 देखो r क्रॉस n रे j डिपेंड नाही सो समेशन बाहर पळे आसिला r क्रॉस n बाहर पळे आसिला समेशन ओवर
mj ओके आकु a क्रॉस b को लिख परिबी b क्रॉस a सो मु लिख परिबी n क्रॉस n कैप क्रॉस ओके समेशन ओवर j mj r j वेक्टर ओके तो एटा मु लिख परिबी कोन पे लिख परिबी ना a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a तो इतमे माइनस कॉमन नै आसली जेतु मास टा हला गोटे स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट ताको हमें भीतर को एंटर करले सो समेशन ओवर j mj ओके अच्छा तो जदी rj टा कोन हला पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू बा रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास बा ओड ओके तो एठी हम जानि चंती नाउ समेशन ओवर j ओके mj rj बा mi ri हमें पढ़ी इज इक्वल टू 0 मास मोमेंटा m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 जो आस्तिला स्टार्टिंग रो म कहितली ओके एंड ए क्वांटिटी टाको हम कहबा एंड समेशन ओवर j mj rj क्रॉस n कैप मींस sin थीटा आसीबो माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस रो स्क्वायर rj अछि माने विथ रिस्पेक्ट टू o सेंटर ऑफ मास तो ये हेजिबो i विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बा i cm ओके तो एटा तले कोन हेजिबो m r क्रॉस n कैप ओके r और n दिटांक परपेंडिकुलर देखिबा हम डायग्राम अनुसार r वेक्टर देखो r वेक्टर हम कहचंती ए दिटांक r वेक्टर कोन एक्सिस को परपेंडिकुलर हबो एटा को परपेंडिकुलर हबो एटा को परपेंडिकुलर हबो ओके तो सेति पई n कैप और r कैप भितर एंगल हला केते 90 डिग्री ओके सो जदी 90 डिग्री हला ताले r क्रॉस m जगह हम कोन लिखिबा m r sin 90 रो स्क्वायर ओके sin 91 प्लस आ जगह में कोन लिखिबा ना i ओके तो एटा तो 0 हो गला सो -2 into 0 ओके तो i dash is equal to m r square plus i about center of mass okay so that is the perpendicular parallel axis theorem okay that is the parallel axis theorem okay. Similarly हमें प्रूव करबा कोन perpendicular axis theorem which is very short बहुत शॉर्ट अछि तार बेसी लॉन्ग नहीं ओके तो संगे संगे प्रूव हबो देखो नेक्स्ट perpendicular axis theorem okay so it is important in perpendicular axis theorem right it is applicable only on 2D object ba planar object okay so write down the moment of inertia of a uniform means सब जगह mass distribution समान uniform plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moment of inertia about any two axes any two perpendicular axis any two perpendicular axis in the plane the plane upare thiba axis okay in the plane that intersect on the first axis जोटा हमें गिवन एक्सिस नहीं थिबा जो परपेंडिकुलर एक्सिस टा से एक्सिस को कोन हबो ना सही एक्सिस देखि इंटरसेक्ट करिवो तो एक्चुअली कोन कहिला स्टेटमेंट कहि कि लेट्स सपोज एटा ଗୋଟେ रेक्टेंगुलर लामिना ओके सो लेट्स सपोज एटा ଗୋଟେ रेक्टेंगुलर लामिना ओके सेठी लेट्स सपोज एटा हला थीटा एक्सिस ओके सो एटा एक्चुअली जेड एक्सिस लेट्स सपोज एटा हला जेड एक्सिस ओके एटा हला जेड एक्सिस okay so it actually x axis y और x axis एला x axis एला y axis जोटा कि रेक्टेंगुलर प्लेन ले अछंती z axis ताको परपेंडिकुलर मींस ता भीतर देखि जाय छै ओके ओके देन नेक्स्ट हम गोटे p पॉइंट नबा
जार मास स्मॉल मास हला dm से पॉइंट हला p ओके डिस्टेंस हला r परपेंडिकुलर डिस्टेंस हला r बिकॉज़ z एक्सिस रो हला o z एक्सिस टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हला r ओके तो आमे जदी अबाउट z एक्सिस रे आमे कैलकुलेशन करबा कोन अबाउट z एक्सिस रे जदी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करबा सो I z is equal to dm जेहेतु r टा z एक्सिस को परपेंडिकुलर सो dm r स्क्वायर इंटीग्रेशन ओके टोटल पे हमें कौन करबा छोटा dm जो मास नेचन तक हमें इंटीग्रेशन करबा ओके तो ई r टा हम जदी एटी परपेंडिकुलर ड्रा करबा x एक्सिस को तो एटा हे जबो कोन x एटा हे जबो कते y बा एटा हे जबो x एटा हे जबो y तो हमें r स्क्वायर को लिखि परिबा dm रो इंटीग्रेशन r स्क्वायर को लिखि परिबा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओके सो आकु दुटा इंटीग्रेशन ला हम दबा x स्क्वायर dm प्लस y स्क्वायर dm ओके तो I z is equal to x square dm hela moment of inertia about x axis y square dm hela moment of inertia about y axis so I z is equal to ixx plus iy okay so ix kona ix hela moment of inertia about x axis iy is equal to moment of inertia about y axis तो आमे बेसिक क्लास नबानी 45 मिनिट्स रा क्लास ओवरऑल रखिबा ओके केतरा टिके छोटो हो जिवो केतरा टिके बडो हो जिवो डिपेंड्स अपन द कोन क्वेश्चन केते क्वेश्चन आमे कोड होछ ओके सो आर एप्लीकेशन नै कि आमे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करबा गोटे सिंपल ऑब्जेक्ट रा ओके तो बहुत सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करबा आपरे इंटरेस्टिंग क्लास राय देखो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करिया पई हमें फर्स्ट लेट्स सपोज हमें गोटे नबा थिन रॉड ओके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड पतला रॉड ओके तो लेट्स सपोज एटा हला गोटे रॉड लेट्स सपोज एटा हला गोटे थिन रॉड थिन ओके थिन रॉड ओके तो सेंटर रे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन करबा अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू its center and perpendicular to the rod okay the rod ro length let's suppose l rod ro length hela l so it is the origin hela a point hobo minus l by 2 distance रे end point hobo एपटे plus l by 2 distance okay तो आमे कोन कले गुटे स्मॉल रॉड रो गुटे स्मॉल सेगमेंट नेले dx जहार मास हला जहार लेंथ हला dx जहार मास हला m और से origin लु x distance रे लोकेट अछि ओके तो एटा हला लेट्स सपोज x एक्सिस एटा हला y एक्सिस ओके लेट्स सपोज एटा हला x एक्सिस ओके ओके तो write down a thin uniform rod AB एटा हला A end एटा हला B end ओके AB of length L and mass M and mass capital M okay then the mass per unit length lambda is equal to केते हबो टोटल मास हला m टोटल लेंथ हला l तो ताहले यदि m सॉरी l लेंथ रे देखो l लेंथ रे केते मास रहउची ना m मास रहउची ताले यूनिट लेंथ रे केते मास रहइबो ना m डिवाइडेड बाय l सेटा पूछन हमें मास पर यूनिट लेंथ ओके ताले dx लेंथ रे केते मास रहइबो dx लेंथ रे मास m by l into dx ओके बा ए m by l को हम कहउछन lambda is equal to m by l mass per unit length ओके ओके तो देखो तो एटा ऑलरेडी हमें एटा यूनिफॉर्म जेतु अछि हमें एटा लिखि पाइले नॉन यूनिफॉर्म केस पे हम एमति लिखिबा देखो यूनिफॉर्म केस पे हम एमति लिखिले ओके तो नॉन यूनिफॉर्म केस पे हम लिखिबा लैम्ब्डा इज इक्वल टू dm upon dl बा dx dm upon dx गोटे छोटा dx लेंथ रे जदी dm मास रहउची ताले ओवरऑल हमें कैलकुलेशन करि परिबा इंटीग्रेशन करि ओके ओके तो केस 1 कोन पचारची केस 1 देखिबा हमें
a moment of inertia about axis ऊपर सब डिपेंड करे moment of inertia. So about an axis क्वेश्चन ले सब गोटे axis मेंशन थी. ओके axis perpendicular to its length and passing through center through the center O. Okay. Okay. So let's suppose आम एबे कौन करिबा ना तार मास पर यूनिट लेंथ लिखिबा. ओके सो छोटो मास ताले dm रो मास केते से जो छोटो एलिमेंट अछि dm तार मास केते ना m डिवाइडेड बाय l इनटू dx लेंथ रे केते मास रहबो ना m अपॉन l इनटू dx. तो di ओके छोटो एलिमेंट रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस di इज इक्वल टू. ओके सो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस केते x तार मास हला dm परपेंडिकुलर डिस्टेंस हला x. तो कौन हम ना dm इंटू एक्स स्क्वायर. सो di इज इक्वल टू dm एक्स स्क्वायर. ओके तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करबा dm को एक्स स्क्वायर. ओके तो इंटीग्रेशन dm जगह में केते पुट करबा ना m यूनिफॉर्म अछि बोली m बाय l डायरेक्ट पुट कर देले m बाय l इनटू dx इनटू एक्स स्क्वायर. और x रो लिमिट कोन अछि ना -l/2 रु +l/2. ओके तो m by l constant बाहर पळे आसला. ओके इंटीग्रेशन -l/2 रु +l/2 ओके x स्क्वायर dx. तो m डिवाइडेड बाय l इनटू x स्क्वायर हला x³ डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन -l/2 रु लिमिट +l/2. ओके तो m by l इनटू 1 by 3. ओके तो l by l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ये हला माइनस. ओके माइनस सॉरी q अछि ना तो एल क्यू डिवाइडेड बाय 8 माइनस ये माइनस माइनस है प्लस एल क्यू डिवाइडेड बाय 8. ठीक है तो m अपॉन l इंटू 1 बाय 3 इज इक्वल टू ये केते हिजबा ना 2l³ अपॉन 8. तो 3 रे कटियल सॉरी 2 रे कटियल 4 4 3 12. सो ml स्क्वायर अपॉन 12. so moment of inertia about center perpendicular bisector है ml square by 12 है important एटा सब बळे काम आसीबो तमे मन रखियो. ओके केस 2 कोन 2 केस कोची केस 2 डिफरेंट एक्सिस पे हम बात कर परिबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट an axis perpendicular to its length and passing through one end. Okay तो से कोची कि लेट सपोज एटा गोटे रड अछि. ओके गोटे रड अछि ए अबाउट रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते आई डैश केते. ओके सो लेट सपोज सेंटर देखि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी हम कैलकुलेशन करछंती तार लेंथ जदी l हुए ए डिस्टेंस टा केते हेजिवो ना l/2 हेजिवो. तो ए एक्सिस रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इज इक्वल टू केते ना ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. ओके तो वी नो i इज इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. okay so according to parallel axis theorem अनुसार हम लिख परिबा i dash is equal to i plus m r square. r ला दिटा को एक्सिस भीतर डिस्टेंस. तो i dash हमको कैलकुलेशन करेर अछि i हमको जणा अछि थ्रू सेंटर ऑफ मास रहला ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस m एट डिस्टेंस हला अंक भीतर l/2 दिटा को एक्सिस भीतर डिस्टेंस लगे दे l/2 रा स्क्वायर. तो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. ओके तो एटा भी तुम मन रखियो. ओके आई डैश एटा मन रखो नले सांग सांग गोटे मिनिट रे कैलकुलेशन हे. ओके ओके सो नेक्स्ट क्लास रे हमें रेक्टेंगुलर लामिना सिलिंडर स्फीयर ओके डिफरेंट एक्सिस रे धीरे धीरे सर्कुलर डिस्क ओके रिंग हमें सब धीरे धीरे कैलकुलेशन. तो आज मैं देता हूं
नेक्स्ट क्लास रे फिर देखा। थैंक यू।